हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड, व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड in any direction and allowed to move under gravity alone, then its motion is known as projectile motion। यदि किसी भी बॉडी को हम किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें and then allowed to move under gravity alone, then its motion is known as projectile motion, right? Now there are some examples of projectile motion। पहला एग्जाम्पल, यदि हम किसी भी बॉडी को ग्राउंड से हम थ्रो करते हैं, मेकिंग एन एंगल थीटा with horizontal with speed u, then the path followed by the body is like this, and this such type of motion is known as projectile motion। Second example is body is projected from some height above the ground, and this body is projected horizontally, then the path followed by the body is like this, and such type of motion is also known as projectile motion, right? And when this is number 2 example, number 3, when body is projected from this inclined plane, suppose here this angle theta, and body is projected with speed u, making an angle theta with the inclined plane, then the path followed by the body is this। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डिफरेंट टाइप की प्रोजेक्टाइल मोशन होती हैं। जनरली दो तरह की मोशन हम पढ़ेंगे। नंबर 1 दिस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड नंबर 2 दिस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो आज की क्लास में केवल हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल डिस्कस करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो नंबर 1 इज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके अंदर हम एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सम हाइट अबव द ग्राउंड, सपोज दिस इज h, दिस origin here, and this is x is equal to r, and the body is projected with speed u horizontally, then the path followed by the body is like this, and here the velocity is along y-axis, initial velocity is 0। now motion along x-axis, पहले इसकी मोशन डिस्कस करते हैं। motion along x-axis, then from second equation of motion, this is s is equal to ut plus half at square। now s is equal to x and u is equal to initial velocity along x-axis, and this is u into time t, but acceleration along x-axis is 0 because there is no force on the body along x-axis, therefore this is 0, and hence t is equal to this x upon u। this is equation number 1। now motion along y-axis, and again from second equation of motion, this is y is equal to ut plus this half at square, y is equal to ut plus half at square। so this is y is equal to u means initial velocity along y-axis, and this is 0, therefore this 0 into t is equal to 0 plus this half into acceleration along y-axis is g into t, and t is equal to, from first equation, this is x upon u, this whole square,
and on solving, this is y is equal to how much? This is gx square upon, this is 2u square, gx square upon 2u square, and this can be written as this is x square is equal to 2u square upon g into y. So this equation is the equation of parabola. This equation represents the equation of parabola. Therefore, path followed by the body is parabolic. ये जो पाथ फॉलो करती है बॉडी, दिस पाथ इज नोन एज पैराबोलिक पाथ, राइट ना। अब इसमें हम सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब द टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन एयर, देन मोशन अलोंग y एक्सिस में मोशन देखते हैं तो y एक्सिस में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. दिस टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T. Therefore this x is equal to initial velocity along y axis is 0 and this is half into g into capital T square, or this T is equal to, this is 2h root of this 2h upon, this is time of flight. Time of flight means the time taken by the body to reach from the top to ground. यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम होता है, that is time of flight. Now number two, horizontal range is denoted by r, then motion along this x-axis, then x is equal to, x-axis में मोशन कंसीडर करें तो this x is equal to speed into time. This is here x is equal to ut plus half at square. This is x is equal to ut plus half at square. Now u is equal to, here u and acceleration is 0, right? Now therefore this x is equal to how much? This is range. X is the range. Therefore range is equal to u into t, and t is equal to this root of 2h upon g. This is what? Horizontal range. This is horizontal range. तो इस horizontal range को मैं यहाँ पर लिखता हूँ. This is r is equal to u into 2h upon g. This is horizontal range, right? Now न्यूमेरिकल करते हैं इसी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पर. सपोज बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ u is equal to 9.8 meter per second from the height of this h is equal to 490 meter. 490 मीटर की हाइट से किसी भी बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टली 9.8 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया. Now body follows this parabolic path, right? And here this velocity is suppose v. Now find number one time of flight find करें कैपिटल T. नंबर 2 इसका रेंज फाइंड करें, हॉरिजॉन्टल रेंज. फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस हॉरिजॉन्टल रेंज. नंबर 2, दिस नंबर 3 इज velocity v1 at point
एट पॉइंट P, यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करें P पॉइंट पर, एंड दिस इज T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। पॉइंट P पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, दिस सपोज वेलोसिटी v1। नंबर 4, find the value of this v at point Q. Number 5, value of angle theta। ये एंगल थीटा भी आपको कैलकुलेट करना है। बॉडी आपने प्रोजेक्ट की हॉरिजॉन्टली 9.8 मीटर पर सेकेंड से फ्रॉम द हाइट ऑफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड, देन फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। नंबर 2, हॉरिजॉन्टल रेंज, और नंबर 3, वेलोसिटी v1 एट पॉइंट P, नंबर 2, वैल्यू ऑफ v एट पॉइंट Q, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंगल एट पॉइंट Q, हियर दिस पॉइंट Q। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मोशन अलोंग y एक्सिस हम कंसीडर करते हैं, मोशन अलोंग y एक्सिस। और y एक्सिस में क्या करें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h इज इक्वल टू 490 मीटर, h इज इक्वल टू 490 मीटर, एंड दिस इनिशियल स्पीड है, दिस इज u। y एक्सिस में initial speed is 0 because body is projected horizontally, therefore this is u is equal to 0. Now this here 0 and this is 1 upon 2 into g is equal to 9.8 and this is t square. Now this is here 4.9, therefore this t square is equal to, this is 490 upon 4.9, so this is here 100, therefore t is equal to 10 seconds. So this is time of flight. Now range find करना हमें, range, horizontal range r की वैल्यू चाहिए, तो क्या करें, मोशन अलोंग x एक्सिस हम कंसीडर कर रहे हैं, और सेकेंड इक्वेशन हम यूज करें, then x is equal to ut plus this half at square, this r is equal to u. Initial speed along x axis is this 9.8, so here this is 9.8 into time, हमें टाइम चाहिए बॉडी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम, this 10 second here, plus acceleration along x axis is 0, therefore here 0, this is 9.8 into 10, so this is equal to 98 meter. This is 98 meter. This x is equal to u into t, right? x is equal to u into t. u कितना है आपका, 9.8 है, 9.8, ठीक है, और हमारा t कितना, 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन हमारा x एक्सिस में 0 है, तो दिस इज 98 मीटर, r इज इक्वल टू 98 मीटर, राइट। नाउ नंबर 3, वेलोसिटी एट पॉइंट P, v1 की वैल्यू चाहिए हमें। इस पॉइंट पर दो वेलोसिटी हैं, एक तो वेलोसिटी हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरी यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है। तो देयरफॉर हियर वेलोसिटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर पहले वेलोसिटी देखें, पॉइंट P पर ये v1 का y कंपोनेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज नंबर 3, थर्ड पार्ट। तो वेलोसिटी एट पॉइंट P1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, मोशन अलोंग y एक्सिस में मोशन ले रहे हैं, y एक्सिस में, और फिर फर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं हम इसकी। तो दिस इज v1y इज इक्वल टू दिस v इज इक्वल टू u प्लस gt, ठीक है। तो u कितना है यहाँ पर, y एक्सिस में u कितना है, दिस इज 0, u इज इक्वल टू 0।
ठीक है, इनिशियल स्पीड वाई एक्सिस में प्लस जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देयरफॉर दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब दो वेलोसिटी हमें मिल गई, यहाँ पर 9.8, यहाँ पर भी 9.8, देयरफॉर दिस v1 इज इक्वल टू, क्या करते हैं दोनों पैरेललोग्राम से, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो दिस इज 9.8 प्लस 9.8 का दिस होल स्क्वायर, तो दिस इज 9.8 इंटू रूट टू दिस मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ नंबर 4 क्या चाहिए, एट पॉइंट क्यू पर भी दो वेलोसिटी, एक तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में और दूसरा यहाँ पर ये वाई एक्सिस में। दिस एक्स एक्सिस वेलोसिटी डज नॉट चेंज बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो हियर इट इज हाउ मच, दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस वेलोसिटी क्या कर रहे हैं पॉइंट क्यू पर, एट पॉइंट क्यू। तो वाई एक्सिस में हम इक्वेशन ले रहे हैं, वाई एक्सिस में, ठीक है, वाई एक्सिस में इक्वेशन, तो कौन सी इक्वेशन, हमें वेलोसिटी चाहिए, यहाँ पर हमें वेलोसिटी चाहिए ये, तो दिस इज v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। नाउ दिस v इज इक्वल टू y कंपोनेंट ले रहे हैं, तो y एक्सिस में ये इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस दिस 9.8, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है 10 सेकेंड, दिस 10 सेकेंड हियर, तो दिस वेलोसिटी कंपोनेंट इज हाउ मच, दिस इज 98 मीटर पर सेकेंड। Now the resultant v is equal to root of this is 9.8, this 9.8 square plus this 98 square, ठीक है। On solving this is nearly equal to 98 meter per second, this is nearly equal to 98 meter per second on solving 98 meter per second। now एंगल थीटा चाहिए हमें, एंगल थीटा नंबर 5, वैल्यू ऑफ एंगल थीटा चाहिए, वैल्यू ऑफ एंगल थीटा क्या करें, दिस tan थीटा इज इक्वल टू देखिए ये यहाँ पर आपका इस तरह से ये वेलोसिटी है, तो ये आप ऐसे ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स vy अपॉन दिस इज vy अपॉन vx, दिस इज y एक्सिस में और दिस x एक्सिस में, तो vy अपॉन vx, दिस tan थीटा इज इक्वल टू vy इज हाउ मच, vy इज दिस 98, ठीक है, दिस इज 98 हियर, this is 98 and vx is equal to how much, vx is 9.8, so here this 9.8, ये decimal here, and this is theta is equal to tan inverse 10, theta is equal to tan inverse 10। तो इस तरह से हम ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या दिया था, बॉडी ऐसे 9.8 से थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द हाइट ऑफ 490 मीटर, देन कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने क्या किया, दिस इक्वेशन वाई एक्सिस में सेकंड इक्वेशन, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकेंड। फिर हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स एक्सिस में सेकंड इक्वेशन, तो दिस इज u इंटू टी, तो u हमारा 9.8 और t हमारा 10, तो दिस इज 98, r इज इक्वल टू 98 एंड द वेलोसिटी v1 चाहिए हमें एट पॉइंट P। तो इसके दो कंपोनेंट, एक तो यहाँ पर 9.8 होगा क्योंकि ये x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, और ये वेलोसिटी हमने यहाँ पर कैलकुलेट की v इज इक्वल टू u प्लस gt से, दिस इज हाउ मच 9.8। तो दोनों का हमने पैरेललोग्राम से, दिस इज इक्वल टू 9.8 रूट 2। नाउ एट पॉइंट Q पॉइंट पर हमने फिर दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट तो सेम हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये कंपोनेंट कैलकुलेट किया v इज इक्वल टू u प्लस gt से, this u is equal to 0 and g is equal to 9.8 and t is equal to 10 second, so this is 98 meter per second, and then using parallelogram, so this is equal to 98 meter per second. Now angle theta is
Vy upon Vx. So this is 98 upon 9.8. So this theta is equal to tan inverse 10. तो आज के लिए केवल इतना ही. थैंक यू.